All right, so let's start with correlation and regression. Chapter number 10 जो है वो correlation and regression के मुतालिक है, and this is where we start the bivariate analysis. That means कि हम दो वेरिएबल्स का एनालिसिस जो है अब स्टार्ट करें. बाइवेरिएट मतलब टू वेरिएट एनालिसिस. दिस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जिसका मतलब है कि दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के इस्तेमाल भी हो सकता है. बट हम बेसिक लेवल पे पहले बाइवेरिएट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस में ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल होती हैं. सो जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर में हमारा वो है कोरिलेशन. Again, correlation has two aspects. Number one, this is a part of the descriptive analysis also. Descriptive statistics में जैसे हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को यूज करके, वैसे ही कोरिलेशन भी दो वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने का नाम है. तो कोरिलेशन at some level is a part of descriptive analysis. But another part of correlation is inference, that when we see that the relationship between two variables is significant or not, that becomes hypothesis testing. And hypothesis testing is basically inferential statistics. तो correlation जो है इस तरह से relate करती है दोनों से. तो correlation is a relationship between two variables. And mind it that these two variables are required to be quantitative. Okay, so quantitative variables में, दो quantitative variables में जो relationship है उसको हम correlation कहते हैं. आपने descriptive statistics में statistics जब आपने पहला कोर्स पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा होगा covariance. So covariance is a diluted form of correlation. Correlation is a standardized form. स्टैंडर्ड स्कोर्स अगर आपको पता है जेड स्कोर, तो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म का भी आपको पता होगा क्या है. स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म से मुराद ये है कि कोरिलेशन जो है वो जैसे हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका मीन 0 पे होता है और फिर उसकी जो डिविएशन है वो 1 है, इसी तरह कोरिलेशन भी है. कोरिलेशन 0 पे बिल्कुल नहीं होती और अराउंड 0 वी हैव टिल +1 एंड टिल -1. लेकिन कोवेरियंस में ऐसा नहीं होता. कोवेरियंस का मतलब भी ये है कि दो वेरिएबल्स आपस में कैसे कोवेरी करते हैं, कि एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आएगी. और कोरिलेशन का भी काफ़ी हद तक मतलब यही है. बट दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, वेयर एज कोवेरियंस इज नॉट दैट स्टैंडर्डाइज्ड. कोवेरियंस जो है वो एक्चुअल स्केल जो वेरिएबल्स की होती है, एक्चुअल मैग्नीट्यूड जो होता है वेरिएबल्स का, उसको कंसिडर करते हैं. लेकिन कोरिलेशन उन स्केल्स को, उन यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि हम एक सिंगल पॉइंट पे कोरिलेशन को एक्सप्लेन कर सकें. द डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर्स. क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो उनके हम ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं, वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई. तो x1 y1 x2 y2, इसी तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. Now, usually x is the independent, और independent variable को हम explanatory variable भी बोलते हैं. And why we call that? Because this explains the dependent variable, which is also called the response or outcome variable. Okay, so x variable is usually called independent variable and y is called dependent variable. Independent variable का नाम explanatory variable भी है, और जो हमारा x वेरिएबल है उसका नाम हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी है, और y वेरिएबल का नाम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी है. ओके, सो द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोरिलेशन हैज एन इंट्यूटिव पार्ट इन इट. इसको आप इंट्यूशन से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करें दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का. और स्कैटर प्लॉट आपने पढ़ा होगा क्या होता है. It's a linear plot that actually has different ordered pairs of x and y, and usually it shows a straight line. If it shows a straight line, a linear pattern, then there is some kind of correlation that we can calculate. But if that trend is not visible, so we are not able to calculate the correlation,
or maybe it is not feasible to calculate. So let's see examples of these. So for example, here we have x variable and we also have y variable. आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, उसके साथ y की वैल्यू जो है वो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में नजर आ रही हैं। तो वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगर आपके डेटा में जैसे कि y वेरिएबल में आप देख सकते हैं नेगेटिव वैल्यूज हैं, दिस डज नॉट मीन कि जो आपकी कोरिलेशन है वो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। Data values are just to plot the variable values on the particular graph, and after plotting these values, what you try to see is you try to come up with a linear line or maybe a trend which you can represent as a correlation between these two variables. अगर आप यहाँ पे देखें तो जो x है this can be seen as an ordinal variable or even a nominal variable. For example, अगर ये मैं कहता हूँ कि for example क्या मार्क्स आए हैं किसी क्विज में, नेगेटिव मार्किंग होती है स्टूडेंट्स की, तो कितने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 एंड 4 एंड 5 जो हैं ये स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और y की जो वैल्यूज हैं ये मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आई कैन स्टिल प्लॉट इट, राइट। तो यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव प्योर क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं भी हो तो फिर भी हम कोरिलेशन प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों वेरिएबल क्वांटिटेटिव होंगे तो कोरिलेशन आपके लिए मीनिंगफुल हो। अब when we plot different ordered pairs of x and y on scatter plot, so we can see a lot of patterns emerging from the scatter plots, and those patterns can lead us to understand what kind of linear correlation is available in the data or maybe not existent in the data. So अगर आप देखें तो ये फर्स्ट ग्राफ जो है इसमें आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग जो ट्रेंड है वो नजर आ रहा है। That means there is a linear correlation, but this is a negative correlation. This is an inverse or negative linear correlation, which means with every increase in x-axis, there is a decrease in y-axis, right? And then we have another graph जिसमें हमारे पास upward moving trend नजर आ रहा है. This is positive और direct linear correlation. ठीक है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि every increase in x-axis is showing an increase in y-axis also. And then we have this particular graph where we have almost no correlation. ठीक है, so the correlation is so weak that we can neglect it. कि x में जो increase है उसकी वजह से y का increase explain नहीं कर सकते हैं. So these are very disorganized, unorganized kind of dots that we cannot. Then we have a quadratic kind of relationship. This is not a linear correlation. We can also have an exponential relationship, right? So there can be multiple relationship, but हमने जो correlation देखनी है वो है linear correlation. So linear correlation में we can have this positive or direct correlation or negative or inverse linear correlation. ठीक है, तो correlation हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही आसान सा तरीका है, और फॉर्मूला देख के पहली बार थोड़ा सा स्टूडेंट जो है वो घबरा जाते हैं, बट दिस इज नॉट अ बिग डील. द फॉर्मूला इज बेसिकली, इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड. अगर आप कोवेरियंस का फॉर्मूला देखें तो ये जो आपको न्यूमरेटर में फॉर्मूला नजर आ रहा है ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है. फिर अगर आप ये वाला पोर्शन फॉर्मूला का देखें तो ये x की स्टैंडर्ड डेविएशन है. अगर ये पोर्शन को देखें तो ये y की स्टैंडर्ड डेविएशन. तो फॉर्मूला क्या है कि r जो कि हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, अब r को समटाइम्स आप पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं. सो पियर्सन क्योंकि वो बंदा है जिसने ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट किया, तो उसके नाम से ये फेमस है. सो आर कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आप दो वेरिएबल के कोवेरियंस को उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर देते हैं. तो ये फॉर्मूला यही है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में
n sigma xy minus sigma x multiplied by sigma y divided by n sigma x square minus sigma x whole square under root multiplied with n sigma y square minus sigma y whole square under root. तो ये फॉर्मूला यूज करके हम r फाइंड आउट कर लेंगे. Now let's read it out. The coefficient is a measure of the strength and the direction of linear relationship. Number one, कि जो coefficient है ये आपको क्या बताएगा, strength बताएगा. For example, अगर आप यहाँ पे देखें कि 0 से लेके -1 और +1 तक correlation coefficient की r की वैल्यू हो सकती है. 0 mean there is no correlation and 1 +1, जैसे जैसे 0 से वैल्यू +1 की तरफ जाएगी तो जो पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा. तो 0.2 इज अ वीक पॉजिटिव कोरिलेशन whereas 0.8 और 0.9 is a strong positive correlation. तो strength का हमें पता चलता है. Also because these are positive values, so this shows a positive correlation between two variables. इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पे देखें, तो if we move towards -1, so we see the negative correlation which is inverse correlation, and -0.2 is a weaker negative correlation as compared to -0.8. Okay, so correlation coefficient जिसको हम R से represent करते हैं, this tells us two things about the relationship between variables. Number one, the strength between these two variables. Number two, the direction of their correlation. The range of correlation coefficient is -1 to +1 because this is a standardized relationship. तो हमें पता है कि जो standardized forms होती हैं, they have their mean on 0 and then they have a standard deviation of 1. If x and y have a strong positive linear relationship, r is close to 1. And if x and y have a strong negative linear correlation, r is close to -1. If there is no linear correlation, that means the value of r should be 0 or close to 0. Okay, so number one is that we see what is the value of r. Because this is a negative value, that means there is an inverse relationship. Also because this is closer to -1, this means there's a very strong negative correlationship here. And similarly here, this is a very positive, strong correlationship. But again, there's one more thing which I want to tell here, that usually when we say that the relationship or the correlation is significant or not, for that we have to do hypothesis testing. So just by looking at the value of R, we can say that there is correlation or not between these two variables, but the correlation is significant or not, उसके लिए फिर हमें hypothesis testing ही करनी पड़ेगी, significance find out करनी पड़ेगी. Again, उसके लिए हम p value method use करेंगे, और अगर तो p value जो है वो less than 0.05 है, we will say that the correlation is significant. अब यहाँ पे a positive correlation do exist, but this is weak correlation. And how can we just simply see this just by looking at the scatter plot? Look at these values, they're getting out of the way. तो एक लीनियर ट्रेंड से थोड़ा हट के ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, और यहाँ पे इतनी ही ज़्यादा स्कैटर्ड चीज़ें हैं, तो फिर हम कहेंगे कि बहुत ही weak, it's very diluted form of correlationship. So there is minute or negligible level of correlation exist, which may be due to chance, which is not significant. Okay, कैसे कैलकुलेट करते हैं? Let's see the procedure. Number one, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, x and y. ठीक है? And let's see what I'm trying to say is कि जो students के study hours हैं, okay, they have an impact or they have a correlation. Okay, I'm not talking about impact here because correlation does not talk about the impact of one variable on another variable. So right now we are only looking at correlation. So study hours,
उनको हम डिनोट करते हैं x से, और y इज द CGPA ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो y से हम CGPA को डिनोट करते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स हैं, उनकी x की वैल्यूज हैं और y की वैल्यूज हैं। तो पहले हम x की वैल्यूज को सम अप करेंगे, फिर y की वैल्यूज को सम अप करेंगे। एंड अ गुड थिंग वुड बी, बिफोर डूइंग ऑल दिस, वी विल प्रिपेयर अ स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्कैटर प्लॉट बनाना पहले इज लॉट मोर feasible because this gives you a visual representation of the data, and you can see that either there is some kind of correlation or not. If there is some kind of correlation, it becomes visible on the plot, and you can carry that on with your calculations. So you can see if you're making some wrong calculations, if your data is showing you a positive trend but the negative value of coefficient can be very troublesome for you, right? So you can also verify your results from the scatter plot. So I would suggest that before doing the correlation questions, you should rather be putting on a scatter plot for the data. So x की वैल्यूज को हम सम अप करेंगे, y की वैल्यूज को सम अप करेंगे, x की वैल्यूज को ऑर्डर्ड पेयर्स को, x1 को y1 से, x2 को y2 से, इसी तरह हम हर ऑर्डर्ड पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उनको सम अप करेंगे। देन वी विल टेक हर x वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, उसका सम फाइंड आउट करेंगे, हर y वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, उसका सम फाइंड आउट करेंगे। And simply by finding all these things, we will put the values into this formula and we will come up with the value of R, which is the value of correlation, right? Okay, okay. So this is very interesting. कि हम जब भी स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूलाज पढ़ते थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, तो आपको पता होगा कि आप क्या कहते थे कि आपकी एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, उसको माइनस करते थे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और स्टैंडर्ड एरर पे आप उसको डिवाइड करते थे, राइट? सो यूजुअली सारे टेस्ट तो आपके ऐसे ही हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही पैटर्न है। तो स्टैंडर्ड एरर की जगह हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस को ले लिया, राइट? और यहाँ हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज, उनको हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। तो बेसिकली जो अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल्स हैं स्टैटिस्टिक्स में, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड करते हैं। ओके, सो लेट्स सी इसमें हमने जो दो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया। नंबर वन, आप देखें x की वैल्यूज को आपने सम अप किया, y की वैल्यूज को सम अप किया। यहाँ पे आपको जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव सम नजर आ रहा है, -1। देन x y को आपस में मल्टीप्लाई किया, हर ऑर्डर्ड पेयर को आपस में मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद हमारे पास x एंड y को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली वैल्यूज आ गई जिनको हमने सम अप किया। Then we took the square of each x value and we added up those sums, those square sums. So this is the product of them. So then we squared each y value, और स्क्वायर करने के बाद हमने तमाम प्रोडक्ट्स को आपस में सम अप करके समेशन y स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। सिंपली फॉर्मूला में पुट किया हमने, और हमारे पास 0.986 वैल्यू आ गई, which is a positive value. That means there is a strong positive linear correlation between x and y, and this is just the correlation coefficient. We are not sure that there is a significant correlation. Since this is a very big value, this is near to +1, so of course there's going to be a significance in this, but usually जब हमारी वैल्यू 0.6 0.5 के करीब आती है, तो we have to do hypothesis testing. Okay, so simple as that. Let's see another example. The following data represent the number of hours 12 different students watched television during the weekend and the scores of each student who took a test the following Monday. So, okay, this looks like my biostatistics class. कि उन्होंने टेस्ट से पहले जो है वो टीवी देखा है, and there are 12 students. In fact, this can be the BBA's statistical inference class because they are nearly 12 students. So they watched the television during the weekend, and the score of each student was on the test, which they actually conducted on Monday. So यहाँ पे हमारे पास hours हैं, watch television, and then we have scores of the test, right? So what we have to do, we have to display the scatter plot, and then we have to calculate the correlation coefficient. So ordered pair क्या है? 096, 185, 282, 374, 395,
and so on, right? तो इन ordered pairs को हम plot करेंगे एक graph के ऊपर. So you can see that when we have x0 and y96 तो हमारे पास ये वाला dot आएगा, right? So when we have 185, this is the dot. When we have 282, this is the dot, and so on. So just by plotting these ordered pairs on the scatter plot, can you see a trend emerging from these dots? Of course, and that is a negative correlation coefficient. And just by looking at this line, this assumptuous line, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये correlation जो है, this is going to be around 7.7.8, right? Or maybe less than that. क्यों? Because अगर तो ये steeper होती है इससे, तो this should have been near to -1. So this is going to be minus 0.7, 0.8, and this is just an assumption which I'm saying. I might be wrong. लेकिन let's see. So यहाँ पे हमने अपने डेटा को उस फॉर्मेट में ले आए हैं जो हमें चाहिए था. एक्स वाई को आपस में मल्टीप्लाई किया है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने एक्स का टोटल फाइंड आउट करना है, वाई का टोटल फाइंड आउट करना है, समेशन एक्स वाई फाइंड आउट करना है. तो सम अप कर लेंगे इन सब को हम. तो ये हमने सम अप कर लिया यहाँ पे, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई सारी की सारी. अब इसको फॉर्मूला में पुट किया एंड लेट्स सी. So we have a negative 0.831, right? So this shows a positive, oh sorry, a negative, an inverse because there is a minus sign, a negative strong correlation. This is an inverse relationship. Now इसकी अब meaningfulness क्या है, कैसे हम interpret करेंगे अपने results को? हम interpret ऐसे करेंगे कि we have our independent variable and we have a dependent variable. So with an increase in the independent variable, there is a decrease in the dependent variable. So the more hours you spend watching television, the less score that you will gain on the tests. So remember that कि correlation को interpret हम इस तरह से करते हैं x and y की form में. If there is a positive correlation, then x will increase with the increase in y. Since there is a negative correlation here, so y will decrease in relationship to an increase in x. So there is a strong negative linear correlation. As the number of hours spent watching television increases, the test will tend to decrease. Right. So now hypothesis testing of correlation. So I rather think that we have spoken about hypothesis testing to such an extent that we should not be doing this and repeating this. But again, I will give you a few hints and then you can simply go and do it on your own, because hypothesis testing हम इतनी बार कर चुके हैं. And whenever we do hypothesis testing, we have the same kind of procedure. Like you have to state the hypothesis. Hypothesis में आप parameters को use करते हैं. So when we do hypothesis testing for correlation, तो we use rho. So ये जो sign है, this is called rho sign. ठीक है, RHO, rho. So rho would be equal to 0 in null hypothesis, and rho would not be equal to 0 in the alternative hypothesis. Okay, why 0 in the null hypothesis? Because rho 0 ho to there is no correlation. So hypothesis जो null hypothesis है वो क्या state करता है? There is no correlation between the variables. But alternative hypothesis जो कि हमारा claim होगा कि there is a correlation exist between the variables, तो rho is not equal to 0. rho क्या है? R जो है वो हमारा sample correlation है, वो estimate करता है किसको? rho को. ठीक है? So the R is a point estimate of correlation which estimate the parameter correlation of the population variables. So दो variables की जो population है उनका आपस में correlation जो है उसको rho मेजर करता है. One more interesting thing. So जैसे आप point estimate create करते हैं, उसी तरह आप interval estimation भी कर सकते हैं, confidence intervals भी create कर सकते हैं. So I will leave this to you, and you have to tell me, this is a kind of homework that you have to explain that how we can construct confidence intervals of our sample correlation. Because correlation की जो value है
हमें तो पता चल जाएगा पी वैल्यू से सिग्निफिकेंट है या नहीं है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है जिसके अंदर पॉपुलेशन कोरिलेशन फॉल करती है, राइट? So these are the questions that we can actually relate to whatever we have studied earlier. Earlier हमने confidence intervals भी build किए, हमने hypothesis testing भी की. So number one क्या आपने hypothesis state कर लिया. Number two आपकी कोई ना कोई alpha value होगी, because you want to be sure about 90%, 95%, 99%. So usually we try to be 95% sure, since the convention is there that 95% use karenge, so most of the time we'll be using 95%. If it is explicitly mentioned in the question that you have to use another alpha value which is given in the question, you might use it, but the convention is that we use 95%. Okay, so sample size भी हमारे पास आ गया जी, n कितना है, और कोरिलेशन के लिए हम जो सैम्पल साइज है उसको एक पर्टिकुलर अल्फा वैल्यू में देखेंगे, जो हमारे पास टेबल है कोरिलेशन का, रो का टेबल होगा हमारी बुक में, ठीक है? उसमें जो वैल्यू आएगी उसको अल्फा वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे. सो इफ यू हैव a p value less than the alpha value, then you will reject null hypothesis, and if you have a p value which is greater than the alpha value, we will not accept, rather we will fail to reject the null hypothesis. Okay, so here is a procedure for this. Determine n, what is the sample size. Now you would say कि sir मेरे पास तो x भी variable है, y भी variable है, तो sample size कौन सा लूँगा? So when we talk about n in correlation, so we are talking about ordered pairs. We only use ordered pairs x and y, क्योंकि scatter plot तो ordered pairs से ही बनेगा ना. तो हमारे पास अगर 10 ordered pairs हैं तो n would be 10, अगर 6 ordered pairs हैं तो n would be 6, अगर 25 ordered pairs हैं तो n would be 25. देन सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो आपने अपना जो है वो मालूम करना है. देन आपने टेबल से जो है सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है, आर की क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको टेबल से देखना है वो किस अल्फा वैल्यू के दरमियान में फॉल करती है, और उस पी वैल्यू को फिर अल्फा वैल्यू की पी वैल्यू से आपने जो है वो कंपेयर करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है. So here's an example. I will leave this example to you. You can simply read it and find out how to do the hypothesis testing. So these can be 3 different ways you can state the hypothesis for correlation. It can be a negative correlation. अगर आपकी assumption ये है, correlation से correlation के हवाले से जितने भी आप questions करेंगे उसमें आपकी आपकी ज़्यादातर जो claims होंगे 99.99% जो आपके claims होंगे, they would be alternative hypothesis. You won't be trying to prove no correlation between the variables, rather you will be trying to prove a correlation between hypotheses. तो correlation जो है वो alternative hypothesis में हम prove करने की कोशिश करते हैं. So claim हमारा alternative hypothesis होगा. अगर तो you're trying to prove that there is a negative correlation between the hypothesis, between the variables, then you will use a less than sign in the alternative hypothesis. And if you're trying to prove there's a positive correlation, you will use greater than sign. And if you're trying to prove that there is no significant correlation, or maybe there's a correlation, but this can be negative or positive correlation, you will use two-tailed test, which is not equal to. All right. So usually when we talk about the test statistic in correlation, we use this formula, which is the T statistics or T distribution formula for correlation, and that is equal to R, which is the correlation coefficient, divided by the standard deviation of R. Now usually we are not this population standard deviation is not available, so we substitute with this formula, which 1 minus R square divided by n minus 2, and हमारा sample size है -2 यूज करेंगे इसके लिए. So ये हम hypothesis testing के लिए यूज करेंगे, ठीक है? और in this text only two-tail hypothesis. So book में आप देखें, हो सकता है सारे के सारे two-tail hypothesis, मेरा ख्याल है कि कुछ एक तो one-tail भी है. So we will see about that. So this was the hypothesis testing. I don't think there's much where we can see something new. Everything is same as in the hypothesis. Okay, one last thing. What is the difference between correlation and causation? Correlation cannot be
assumed as causation. For example, if we collect the data for summer ice cream sale, कि समर में आइसक्रीम की सेल कितनी ज़्यादा होती है, एंड वी कंपेयर दैट विद रोड एक्सीडेंट्स, तो रोड एक्सीडेंट्स भी समर में ज़्यादा होते हैं बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ हीट एंड people want to go home early. They try to rush, and in that rush you see a lot of road accidents during the summer time. सो आइसक्रीम की सेल भी समर में ज़्यादा होती है और रोड एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं. अगर इन दोनों का डेटा आप फाइंड आउट करें और दोनों में कोरिलेशन अगर आप कैलकुलेट करें तो यू विल गेट अ पॉजिटिव आर. तो आपकी पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी. बट डज दैट मीन कि जो आइसक्रीम की सेल है उसकी वजह से रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं या रोड एक्सीडेंट की वजह से लोग आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं? नो, कॉजेशन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय कोरिलेशन. So यहाँ पे क्योंकि some of you are medical students, so I would try to explain कि causation के लिए you do longitudinal research. Okay, I would suggest कि आप इसके spellings जो है ना वो पता कर लें, ज़रा देख लें. I'm a little weaker in spellings, but I'm good in statistics. Okay, so longitudinal research जो है वो आपको करनी पड़ती है causation के लिए. You cannot do cross-sectional research for causation. What is a cross-sectional research? Cross-sectional research ये होती है कि आप एक ही बार डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं. Now this is not good. आपको कंट्रोल्ड रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स करने पड़ते हैं या फिर आपको कोहॉर्ट स्टडीज करनी पड़ती हैं अगर आप कॉजेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और वो एक लंबा प्रोसीजर है. ठीक है ना. कोविड-19 की वैक्सीनेशन क्यों रातों रात अवेलेबल नहीं हो सकती? आपने एक वैक्सीनेशन बनाई, आपने उसको ट्राई किया, 2 पेशेंट्स पे ट्राई किया और इट इज़ वर्किंग. व्हाई कैन नॉट यू commercially make it available? Because you need to conduct random control trials. Okay, so when you do those kind of trials, they are longitudinal studies. You have to take repeated measures, and then you have to compare case to case analysis, and you come to know that where those kind of discrepancies fall, or maybe the things are not statistically significant. So a lot of issues can emerge from that. So क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में जो कि हम रातों रात डेटा लेके एक ही बार में रन कर लेते हैं, जैसे कोरिलेशन है, उसमें हम ये कॉजेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते. तो कॉजेशन की जब भी हम बात करेंगे, हमें ये कंसिडर करना होगा कि कोरिलेशन इज नॉट अ बेस्ट मेजर फॉर दैट. यस, कोरिलेशन कैन बी द फर्स्ट सिग्नल टुवर्ड्स कॉजेशन. आपके डेटा में अगर कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है तो मे बी कॉजेशन कैन बी देयर, बट you also need a subjective opinion about that, because ice creams do not cause road accidents, and road accidents do not cause the sale of ice cream, right? So the fact that two variables are strongly correlated does not in itself imply a cause and effect relationship between the variables. So causality nahi hai, that means cause and effect relationship exist nahi karta. If there is a significant correlation between the two variables, you should consider the following possibilities. So, अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि there is a strong positive correlation or negative correlation, the Pearson R's value is greater than 0.5 or maybe 0.8. So you have to consider these things. Is there a direct cause and effect relationship between the variables X and Y? So again, this is a subjective question, and you have to look into the real life situation. Sometimes this is very clear, sometimes this is not that clear. As we spoke about, the earlier example, the student का जो television का watching का time है वो impact करता है negatively उसके test scores पे. But maybe for some students that's not the case. Maybe television को देखने का जो time है या फिर social media पे जो time आप spend करते हैं, maybe that is not the only variable that can affect a student's result. So there can be other variables that have also a positive correlation. ठीक है. Number 2, is there a reverse cause and effect relationship? Maybe जिस तरह से आप relationship सोच रहे हैं, it's not about the study scores that are being declined due to watching a lot of television. Maybe people who are not in their studies, they feel a lot much bored while reading their textbooks and listening to these kind of statistical analysis. So they rather like to spend much time on television,
right? So reverse cause and effect भी हो सकता है. Number 3, is it possible that the relationship between the variable can be caused by a third variable or by a combination of several other variables? So जैसे मैंने बताया कि आप जिस वेरिएबल को आप अपने एनालिसिस का हिस्सा बनाया आपने, इसको जिसे हम इंडिजिनस वेरिएबल कह रहे हैं, इसके अलावा कुछ एक्सोजिनस वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जो इस एनालिसिस में नहीं है, उनको हमने शामिल करना है और उसके बाद फिर हमें क्लियर पिक्चर नजर आएगी. नंबर 4 is it possible that the relationship between two variables may be coincidental? This is just a coincidence that the correlation exists, and this coincidence can be multifold. Like when we collect the data, maybe there was a particular incident or a time when we collected the data and the correlation existed. But if we collect the data for the same problem again, maybe the correlation do not exist. So again, we have to be very careful when we do these kind of bivariate analysis, because sometimes the results can be consistent, at other times they show inconsistency. So for that, we have to have statistical hypothesis testing, and also we have to see that where we have to calculate the correlation. Usually हम correlation कहाँ पे calculate करते हैं? So जैसे मैंने बताया, causation का पहला indication correlation होता है. तो mostly हम जब regression analysis करते हैं, factor analysis करते हैं, even some of the other parametric testing, जैसे हम risk calculate करते हैं, उसमें हम पहले correlation calculate कर लेते हैं. Correlation हमें बताती है कि दो variables आपस में correlate करते हैं या नहीं करते. अगर उनका आपस में correlation नहीं है तो further कोई statistical analysis जो है वो meaningful नहीं होगा. ठीक है? And sometimes हम ये भी for example, if you go and study advanced statistics, applied statistics, तो उसमें आपको पता चलेगा कि multicollinearity एक बहुत बड़ा टॉपिक है. Multicollinearity का मतलब ये होता है कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे जिनका आपस में कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होता है, उनको आप एक ही मॉडल में पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उनको एक ही मॉडल में यूज करेंगे तो यू कैन नॉट एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद अ पर्टिकुलर वेरिएबल. You will have a very vague picture, a diluted picture of the impact of multiple variables on a single variable. So these are advanced topics. I'm not going into them. So हम correlation को हमारा मकसद ये है कैलकुलेट कर लें कैसे पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसके ज़रिए से हम उसको कैलकुलेट कर लें, एंड नंबर 2 उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लें. ठीक है जी. So I will give you some practice questions in the form of an assignment. So let's do that, and then after that we will go to regression analysis.